What are the Google software engineer interview questions in 2022? Hello dear engineers. Today I'm gonna describing about an interview questions answer of software developer and software engineer job in Google and Microsoft. So without any questions, any delay, let's start the video. And so uh, 2022 Google software engineering sorry 2022 Google software engineer interview questions answer. There are so number one, why are manhole covers round? This is first question and answer. The round cover can't slip through smaller openings, no angles for the alignment, easy handling for pulling off and putting back. It never falls inside the hole. And the questions number two, what is the algorithm used for graph travelers? Uh, Traversal. Sorry, what is the algorithm used for graph traversal? So answer is DFS, which means depth first search, and BFS, which means breadth first search, are the efficient algorithm used for graph traversals. And number three, what is a binary search tree? Answer, a binary search tree is a rooted data structure where internal nodes uh, store a key greater than all the keys in the nodes left subtree and less than those in its right subtree. And you can study in data science detail uh, uh, of subtree of about subtree. Uh, you can purchase a course by edx, or you can learn freely on youtube platform. So number four questions, how to represent binary search by doing a implementations. Answer, by using one dimensional 1D array to represent a binary tree. So one person comment on my Facebook page, सर ये कब यही कब का क्वेश्चन। तो मेरे भाई मैं हिंदी में आपको बता दूं, ये आपको 2022 आपको अ, अगस्त में पूछा गया था। ये 2022 आपको अगस्त में पूछा गया था क्वेश्चंस। और ये मैं खुद ही इसके बारे में रिसर्च करके मैं खुद ही यहाँ पर आपको मेन टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ। सो number number 5 questions, in Java programming language, explain the difference between static, constant, and final. So constant variables never change from their initial value, and static variables are static memorial keywords are when you can't change the value assigned to the variables. So you have to mostly prepare and mostly practice with Java programming language, because if you don't practice yourself, then I think you can't do in interview exams. So because most people have trouble
while they solving problem, uh, while they solving their Java programming problem, and uh, they have mostly errors. They have most they get mostly errors. So you have to practice yourself, and so I will sir प्लस प्लस का नहीं पूछता। तो मैं आपको बता दूं, सागर सागर जी, मैं आपको बता दूं कि सी प्लस प्लस का भी पूछा जाता है, ऐसे तो नहीं, लेकिन मोस्टली जावा यूज होता है। तो number 6 questions, what is dead beef? And if you don't know what is dead beef also used in Kali Linux operating systems. So dead beef is a hexadecimal values used for debugging the mainframe, indicating the deadlock or software crash in the embedded system. Number 7, how to sort 1 million arrays of integers efficiently. So this is questions of Java and C++ questions. So by using the counting sort algorithm, which takes advantage of knowing the range of the numbers in the integers array to be sorted array A. So if you don't know, so here is algorithm. Here is given algorithm. If you don't know what is a algorithm, then then you can buy a book by Amazon or Flipkart. The book name is data structure and algorithm. Okay, you you must know about data structure and algorithm, and this is the main part of algorithm. And number 8 questions, what algorithm is used to find a word in a dictionary? Answer, AHO, 4i6 string matching algorithm is used. And number 9, what's 2 to the power of 64? uh, 2 into 64 is equal to 2 to the 4 to the 8 to the 62. It is very simple. Okay, 2 to the 4, 4 to the 8, sorry, 2 to the 4, and uh, here is 64. Okay, 2 to the 4 to the 16, sorry, 2 to the 4 for the 16, 16, and 16 for the 64. Okay, so 2 1 the 2, and 2 to the 4, 2 power 4, and 4 power 4, 16, and 16 power 16, 64, and 64 times 1.80 84 46 and 7 double 4 e plus uh, 19 point. So so this is the main questions of hexadecimal. And let's go number 10. So I hope you have already know about hexadecimal and decimal. So number 10, if you didn't know what is hexadecimal, what is the hexadecimal last topics, then you can
message me and so here is number 10 questions. What is the use of the hash code method in Java? Hash code. Answer: it helps the program to run faster and facilities quick access to the data store. And number 11 question: how to reverse only vowels in a string? And this can be done using stack in the following manner. And number one, store all store all the vowel characters in a set. And number two, create a stack and push all vowel characters present in the input string from left to right. And number three, now again reverse the string for each characters. And number five, return the converted string. And let's go number 12. Number 12 questions: explain Linux virtual memory. The Linux supports virtual memory that is using a disk as an extension of RAM, so that the effective size of value memory grows correspondingly. The kernel will write the contents of a currently unused block of memory to the hard disk so that the memory can be used for another purpose. So I'm asking you, uh, which Linux have you run before? I'm using I'm using Kali Linux and Red Hat Linux also, but I'm beginners of I'm beginners of Red Hat Linux, but I'm expert. I'm expert Linux field in Kali Linux and Arc Linux. So, uh, which Linux do you love, and which field uh, do you have experience? You can comment me. How would you implement a thread-safe LRU cache? And a concurrent LRU cache that supports getting put and the eviction of old case is implemented. The data structures of concurrent linked queue and concurrent hash map are utilized in this process. These two data structures along with a reading or writing clock are utilized in the implementation to make it thread safe. We use a hash map and as well as a doubly linked list as the data structures that we employ in the implementation of an LRU cache. The eviction order can be maintained with the assistance of a doubly linked list and 0 and 1 lookup of the cast can be achieved with the assistance of a hash map. So uh, cache also used in uh, computer BIOS and CMOS. Uh, I know you have already know about uh, BIOS and CMOS. What is BIOS and what is CMOS? You have already know because what is BIOS and number one BIOS and number two CMOS. CMOS. Uh, so I hope you have already know about BIOS and CMOS and cache memory. So
mostly cassette memory used in mobile device and computer laptops and more things. But my my computer have uh, 5 MB of cassette memory, because cassette memory are store data which you have typed uh, randomly and alphabetically numbers, and it will be auto suggest you if you are typing hi dear, how are you, hi dear, how are you. While you typing hi, then after cassette memory all cassette memory uh, while you are typing hi, the cassette memory suggest you after hi, uh, after dear, hi dear. While you are typing hi, then cassette memory suggests you uh, after dear. And so let's go next topics. Number 14. Number 14. How would you go about generating a random sequence of numbers for the lottery? At the moment when a request for just a lottery tickets was submitted, the computer should use some data, including the computer's real-time clock with accuracy to a millisecond, to activate a procedure that generates five numbers and five numbers, one and Powerball number. This method is known is a lottery draw. And number 15 questions: how could an internet client server structure work? Client server architecture refers to the design of a computer network wherein a large number of clients, remote processors, ask for something and receive service from a single centralized server host computer. Client computers offer a user an interface that enables them to make customers inquiries to a server or view the result that are provided by the server clients. Computers are also known as front ends. So uh, uh, I hope you have already know about front end. Front end, you have already know about front end and what is back end. So front end and back end must so you must know about front end and back end in deeply, because uh, they ask with you any questions of front end and back end, uh, like uh, like some questions will be JavaScript or and also HTML questions. It is funny, but it is fact. Actually, it is actually it is actually asking questions. Uh, Front end and back end questions, JavaScript and HTML. Mostly important in software engineering. So 16th number: how would you find the longest soft string which contains only two unique characters? So perform a loop string. It one is equal to or I is equal to 0 and continuing until n1 number 1, and this is number n is equal to number.
Number one, and think about its visited area. Start an inner loop that goes from j is equal to I plus 1 to n number 1, and while it's running, check to see if the current characters s uh, bracket j is bracket j has been seen before. If the condition is met, you should exit the loop and proceed to the next window. If this is not the case, the current characters should be marked as visited, as well as the length should be increased to j minus I plus 1. So I think this is mostly uh, this will be asked with you. And number 17 questions: what is multi-threaded programming? The term multi-threading refers to the capability of a computer program or operating system to support more than one user at the very same time without the need for several instances of the program to be active on the device. So the same persons can make many requests as well as multi-threading, and can handle uh, all of them. And let's go number 18 questions. How do you think digital marketing will change in the next 5 years? So answer is approximately 66% of marketers uh, anticipate that there will be a revenue increase in 2022 and beyond. 90% of them believe that the year 2020 was essential in helping to increase their level of digital engagement, which is tendency that is expected to continue even into 2022. Another of those customers behaviors that is likely to alter when it comes to digital marketing. The only things that the future has in store for the sector is an expansion in both need and potential. In light of the present pandemic situations, every company is rapidly transitioning to online marketing, which has resulted in a abundance of employment prospect for people. Answer. And number 19 answer questions: can you design a mobile social productivity app for a chain of local orthodontist office? Yes. And the answer is yes, I can do it with reliable tools and a team of expert who can assist me I will be able to deliver such an as within 20 to 25 days. And and they they must ask with you the uh, extra questions. uh, can you design a mobile social productivity app? This is the first questions. And uh, you must know about uh, which programming language do you need to develop a application. So uh, they will ask you, can you tell me about some programming language which need you for mobile app development?
So you must know, must know about, and you must say about uh, Java. First number Java, you have already know, and second Kotlin, Kotlin language. Second Kotlin, Kotlin for Android development. Kotlin for Android development, and and uh, for iPhone operating system, iOS, and Apple application, iOS application. So you have to say for iPhone operating system application, you have to say Flutter, Flutter, Flutter. You have to say Flutter. Flutter, Flutter is worked both side. Okay, Java and iPhone operating system both side. It will help you to create a or develop a applications. So and second Dart, second number Dart, and second number Dart, and third number Swift, third number Swift. So Swift is different level programming language, and if you want to create a develop a application, uh, while you while you use while you used Swift programming, while used Swift programming, after uh, this application won't run in Android. If you want to develop uh, develop application, and if you want to run both side Android and uh, iOS, Android and iPhone operating system, then uh, you must use Flutter. You must use Flutter application, sorry, Flutter programming language and Dart programming language. But if you want to only run in iPhone operating system, then and you must use Swift programming language. And number three questions, uh, they will ask you uh, for desktop application. Okay, uh, so if they ask you what is which language do you need for desktop uh, app development, then you have to say Ruby. You have to say Ruby programming language for computer application development. First number Ruby and second number Perl. P E R L, Perl. Wait for a minute. Sir, Ruby message of uh, सर रूबी और पर्ल को हम भाई लिखेंगे तो थोड़ा ठीक से लिख के मैसेज कीजिए, बिकॉज आपका कोई आपका मैसेज पढ़ने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है.
सर रूबी और पर्ल को लिनक्स एप्लीकेशन में रन करा सकते हैं। सो तो मिस्टर शंकर जी, आप रूबी और पर्ल को तो करा सकते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि मोस्टली यूज होता है ये दोनों लैंग्वेज आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। अब आप लिनक्स में कराएंगे तो लिनक्स और विंडोज़ अलग अलग किस्म का है, अलग अलग लाइन का है। लिनक्स है आपको कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स ओनली आपको कमांड कमांड से ही चलता है। आप जैसे कि ये नहीं है कि जैसा मैं ये माउस को इधर हिलाया और यहाँ पर ऐसे किया, इसमें टिक किया ये वाला पेंसिल में, और मैं यहाँ पर ऐसे लाइनिंग खींच दूंगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिनक्स कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। लिनक्स क्या है? कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स कमांड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ क्या है? विंडोज़ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जितने भी आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये यहाँ पर शेप लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये पेंसिल का जितना भी आप आइकॉन देख रहे हैं, या मैं आपको अगर अपनी विंडोज़ वाला मैं आपको ले जाके दिखाऊं, तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं, ये जितना भी आइकॉन है, यहाँ मेरे टास्क बार में आप देख सकते हैं, जितना भी आइकॉन सब है, ये सब आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसे जाता है? विंडोज़ को बोला जाता है। तो विंडोज़ में कोई भी कमांड से आप रन नहीं करा सकते हैं विंडोज़ में। आपको एज लाइक मान लीजिए अगर ये फेसबुक है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये फेसबुक है, ये फेसबुक का आइकन है, तो आप यहाँ पर जाके फेसबुक में ऐसे टिक करेंगे तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगा। लेकिन लिनक्स में अगर आप फेसबुक ओपन करेंगे तो उसके लिए भी आपको लिंक चाहिए, और आपको कमांड देना ही पड़ेगा। विदाउट कमांड का आप ऐसे फेसबुक मान लीजिए या यूट्यूब मान लीजिए या और कुछ भी मान लीजिए, आप बिना कमांड का आप यूज़ सॉरी उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, या तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते विदाउट कमांड। आपको हर स्टेप में कमांड देना ही पड़ेगा। अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपको कमांड देना पड़ेगा एग्जिट। एग्जिट आप वहाँ पर टाइप करके इंटर मारोगे, तब आप वहाँ से बाहर निकल पाओगे। ठीक है। हाँ, तो यू मस्ट नो दिस दिस क्वेश्चंस answer, and let's go without delay, let's go 20 number questions. So 20 number questions. Do you think Google should be charging for its productivity apps, Google Docs, Google Sheets? It's why or why not? So you must know about it, and they will be sorry, they will ask uh, one extra question, is like Google Sheets, and they will include Excel. They will they can include Excel. Google Sheet instead of Google Sheet, they can include Excel or Google Office. Excel or Google Office. Okay. So, do you think Google should be charging for its productivity apps, Google Docs, Google Sheets? It's why or not? So they can include Excels. Uh, सर एक्सेल, सॉरी मैसेज आया है यहाँ पर सर, एक्सेल भी यूज़ होता है। तो मेरे भाई, एक्सेल एक्सेल भी पेड वर्जन का ही है। बिकॉज आप मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जितने भी डेटा है, या आपका कोई बैंक है,
आप जितना भी आपका कोई बिजनेस ही है छोटा से लेकर बड़ा तक, तो आपका जितना भी डेटा है सेल्स से लेकर आपका प्रॉफिट लॉस से लेकर आपको हर एक चीज़ का डेटा, आपका पूरा बिजनेस का डेटा आप एक्सेल में ही रखते हो। पुराने ज़माने में वो क्या बोलता था, खाता में लिख के रखता था कि इस महीना का कमाई इतना हुआ, आज ये प्रोडक्ट मैंने बेचा, या मैंने स्टाफ को इतना सैलरी दिया, आज इतना खर्चा किया। वो सब पुराने ज़माने में आपको बुक्स में लिखा करते थे। बट अभी का ज़माना में क्या होता है, पूरा हिसाब किताब आपका छोटा छोटा मोटा दुकान से लेकर आपका बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तक का पूरा हिसाब किताब डेटा आपको एक्सेल्स में ही रखा जाता है। और इसके लिए गूगल आपको प्रत्येक साल 2025, सॉरी 2000 नहीं, अ, ऐसे तो मुझे भी मालूम नहीं है कितना चार्ज करता है, लेकिन हो सकता है 10 से 15 हज़ार शायद चार्ज करे। वो भी आपको आप कैसा फंक्शंस लेंगे, कैसा आप सेवा लेंगे एक्सेल से, वही हिसाब से शायद चार्ज कर सकता है। क्योंकि मुझे भी नॉलेज, सॉरी नॉलेज नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है कि एक साल का कितना पैसा लेता है गूगल, कितना चार्ज करता है। सॉरी गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कितना चार्ज करता है। क्योंकि एक्सेल एक्सेल भी आपको इसमें इंक्लूड कर सकता है। अब आप बोलोगे नहीं एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का नहीं है, तो मेरे भाई एक्सेल पूछेगा ही। क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो आपको उसमें सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का तो कोई भी ब्राउज़र नहीं मिलेगा, आपको गूगल का एक क्रोम ब्राउज़र मिलेगा। तो आपको मोस्टली ऐसे तो अ, पूछा तो नहीं है अभी तक एक्सेल के बारे में, फिर भी पूछ सकता है। क्योंकि एक्सेल भी पेड वर्जन है भाई में। एक्सेल बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, छोटा से लेकर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में आपको एक्सेल का भी पूछ सकता है। लेकिन एक्सेल का भी अगर आप नॉलेज रख लेते हो तो हो सकता है कहीं पूछ लिया तो आप इसका भी सामना कर पाओगे। सो गूगल मे नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर नॉर्मल यूज़र, बट फॉर बिजनेस मैंने कहा था आपको, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा लेता है। So sorry, Google may not charge anything for normal users, but for businesses, they do have a revenue model. It is now required that new business who sign up for Google app pay $5 per user per month or $50 per customer per year. At the increased annual pricing, This mean this means that a company with 8 employees who all use Google Apps will incur an expense for $400 each year. For the time being, there will not be any fee associated with pre-existing Google Apps for business account. So नेपाल से सर सर मैं नेपाल से हूँ। और आपने जो अभी बताया 8 एम्प्लॉयज़ अगर यूज करें तो $400, ये समझ नहीं पाया। तो ठिकै छ, नेपालीमा पनि भन्दा हुन्छ तपाईँले। किनभने जस्तो यहाँ भनेकै छ, एट द इन्क्रिज्ड एनुअल प्राइजिङ, दिस मिन द्याट ए कम्पनी विथ 8 एम्प्लोइज हु अल युज गुगल। जस्तो यसको भनाइअनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, मानिहालौँ तपाईँको एउटा मानिहालौँ मिनरल वाटरको फ्याक्ट्री छ। अब 4जना तपाईँले एकाउन्टेन्ट राख्नु भएको छ भने 4जनालाई तपाईँले एउटा एउटा कम्प्युटरमा एक्सेल त चलाउन दिनुहुन्छ। हो त्यो 4वटा कम्प्युटरमा एक्सेल चलाएको बापत होइन, अब हुन्छ, अब 2वटा कम्प्युटरमा तपाईँले युज गर्नुभयो भने यति रुपियाँ, 4वटामा युज गर्नुभयो भने यति रुपियाँ भनेर एउटा त्यो हुन्छ क्या। तपाईँले एन्टिभाइरस पनि सो कितने आदमी हिंदी नहीं, सॉरी नेपाली नहीं समझ रहा है, तो मैं अगर हिंदी में बता दूं कि अगर मान लीजिए अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपका बैंक ही है,
तो आप अपना बैंक में अगर 4 अकाउंटेंट रखते हैं तो चारों अकाउंटेंट का कंप्यूटर में आपको एक्सेल्स डालना ही पड़ेगा, या आप डाल डाल लेते हो। तो चारों कंप्यूटर्स में एक्सेल तो रहेगा। तो चारों कंप्यूटर में जो एक्सेल रन करोगे तो उसका क्या होगा, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको पैसा देना ही पड़ेगा, मंथली या ईयरली आपको देना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आप एंटीवायरस एंटीवायरस अगर आप यूज़ करते हैं, इज लाइक मैक कैफी और K7 एंटीवायरस, ऐसे ही बहुत सा कंपनी का है। तो एक हिसाब से मैं ले लेता हूँ क्विक हिल। अगर आप क्विक हिल एंटीवायरस यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, ऑफर होता है कि एक एंटीवायरस, एक कंप्यूटर में एंटीवायरस रन कराएंगे तो आपको 1 साल का 1000 रुपया। और अगर आप दो कंप्यूटर के लिए लेंगे तो आपको 1400 रुपया, 1500 रुपया, या अगर आप 4 कंप्यूटर के लिए लेंगे तो आपको इतना, मतलब जितना आप ज़्यादा कंप्यूटर्स के लिए लेंगे उतना ही वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा रेट कम करते ही जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर है तो आप एक ही लेंगे, 10 लेके तो आपको काम नहीं है। क्योंकि जिसके पास 10 कंप्यूटर है, जो जो आदमी 10 अकाउंटेंट को चला रहा है, 10 कंप्यूटर में 10 एक्सेल चला रहा है, तो उस सॉरी 10 कंप्यूटर में एंटीवायरस यूज करा रहा है, तो उसको तो 10 कंप्यूटर के लिए तो लेना ही पड़ेगा। सो ऐसे इसी तरह से इसका एक इकोसिस्टम होता है कि आप कितने कंप्यूटर्स में आप चलाना चाहोगे एक्सेल। मान लीजिए आप 5 कंप्यूटर में चलाना चाहोगे, तो अगर मान लीजिए महीना का 1000 रुपया अगर एक्सेल आपसे ले रहा है नॉर्मली यूज़र का, तो 5 कंप्यूटर का 5000 रुपया होना चाहिए। लेकिन उसमें से क्या करता है, 400 500 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक आपको डिस्काउंट भी दे देता है। तो ये एक बिजनेस पॉलिसी है। ठीक है। तो ये बिजनेस पॉलिसी में हम डीपली नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हम क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चंस, व्हाट इज रैंडम फंक्शंस रैंड। so rand returns and evenly distributed random real number greater than or equal to 0 and less than 1. So and number 2, सॉरी मैसेज आया है, ठीक है। रविन रविन दास। तो रविन दास ने लिखा है कि सर आप हिंदी इतनी अटक अटक के क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे भाई लैंग्वेज पे मत जाओ, लैंग्वेज पे मैं जैसे बोलूँ, मेरे को जैसे आता है मैं वैसे बोलूँगा। लैंग्वेज पे मत जाओ, नॉलेज में जाओ। ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज में जाओगे तो ऐसे मोस्टली आपको तो प्योर हिंदी बोल के भी बहुत ये ऐसे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, या आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको आ, मान लीजिए कोई क्वेश्चंस, कोई कोई भी क्वेश्चंस आपको सही बता देता है आंसर, तो कोई एक दो गलत भी बता देता है, तो आपको मोस्टली जो चाहिए वो नहीं दे सकता है। तो मेरे भाई आप नॉलेज पे जाओ और आप बेनिफिट्स पे जाओ, लैंग्वेज पे मत जाओ, मेरा यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि मेरे को जैसा लैंग्वेज आएगा मैं वैसे ही बोलूँगा, बस समझना आपको है। क्योंकि आप इतने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हो अपने आप को, और आप एक जॉब गूगल जॉब के लिए अप्लाई करते हो और गूगल जॉब की इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से बुरा मत मानना। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप मान लीजिए आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि C++, जावा, इसमें आपको कितना एरर्स आता है, एरर्स कैसे फिक्स करते हैं दिमाग लगा के। तो मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही दिमाग लगा के समझा करो। एंड जो क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को फेसबुक में, मेरा पेज है एशिया टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन,
तो मैं अभी लाइव ही हूँ। ठीक है, मैं अभी लाइव हूँ मेरे पेज पे। तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप डायरेक्ट मेरे को वहाँ पे मैसेज मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो नंबर 22 क्वेश्चंस, हाउ डू यू ट्रांसफर कुकीज टू द एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स। तो मैं आपको बता दूं आपको कुकीज क्या होता है। ठीक है, कुकीज क्या होता है, यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया। इन्होंने पहले से, मैं बोल रहा था तो इन्होंने पहले से ही क्वेश्चंस पढ़ लिया था और मेरे को बता भी दिया। तो ये बोल रहे हैं, सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूँ, मैं बैंक का कैशियर हूँ। आप बता सकते हैं कुकीज और एचटीटीपी क्या है। तो मेरे भाई फर्स्ट में मैं आपको बता दूँ, एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल, आप ये नेटवर्किंग में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हम अभी ये आपको डीपली इसमें नहीं समझाएंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्वेश्चन आंसर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एच टी टी पी का मतलब जानते ही है क्योंकि एच टी टी पी मतलब बहुत बहुत बेसिक्स बात है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल संबंधी। तो ठीक है, आप क्वेश्चंस किए हैं कुकीज़ क्या होता है। तो मैं बता दूं, कुकीज़ जैसा कि मान लीजिए अगर आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते होंगे शायद इंडिया में, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में दूसरे साइट्स का मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट का मैं एक एग्जांपल में छोटा समय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे आप जाते हो, ठीक है, उस पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको कुकीज़ मांगेगा आपका। ठीक है, उसमें आपको एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ बोल के अ, एक आइकॉन आपको दिखाएगा। आप उसमें क्लिक करेंगे, आपका सब कुकीज़ वहाँ जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये कुकी क्या होता है, आपका पसंद या नापसंद दोनों चीज़ ये क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको, आप रेड कलर का साड़ी सिलेक्ट कर रहे, देख रहे हो, वहाँ पर आपको पसंद है या नहीं है कोई मतलब नहीं है उससे। आप क्या चाहते हो वो भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप दो से तीन बार, एक से दो बार अगर आप रेड कलर का साड़ी वहाँ पर सर्च करते हो, रेड कलर साड़ी प्राइस बोल के अगर आप वहाँ सर्च करते हो, तो मेरे भाई या बहन आप देखना, एक बार, एक घंटे बाद आप देखना, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑटोमेटिक सजेशन आएगा। आप एक बार ओपन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर सजेशन देगा साड़ी के लिए, इतना इतना रुपया, इतना डिस्काउंट, इतना ये। आपको फेसबुक पे भी ऑटोमेटिक सजेशन देगा। अगर आप फेसबुक से कंफर्म किए हैं, कनेक्ट किए हैं फ्लिपकार्ट को, तो आपको फेसबुक में भी आपको ऑटोमेटिक सजेशन, आप सिर्फ एक बार सर्च करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक में भी आपको दिखाई पड़ेगा वही चीज़, सेम चीज़ आपको सजेशन देगा कि मैम ये साड़ी आपने लाइक किया है, ये साड़ी का प्राइस इतना ही होता है। मतलब आपका मन में क्या चल रहा है वो चीज़ आपको ये कुकीज़ के थ्रू से जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे ज्योतिष लोग बोलता है ना कि तुम्हारा मन में क्या चल रहा है मेरे को सब मालूम है। भाई तुम एक बात बता दोगे उसको, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्रेशन दिखा दोगे, थोड़ा सा अगर आप गुस्सा करके दिखा दो, फिर शांत हो जाओ, आपको ज्योतिषी बोलेगा कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, आपको ये पसंद है वो पसंद नहीं। ये क्यों बोलता है, ये आपका फेस का एक्सप्रेशन देख के बोलता है। वैसे ही कुकीज़ भी वही चीज़ है। आप आप जो भी टाइप करोगे, जो भी सर्च करोगे, कुकी को पता चल जाएगा, कुकी को पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ बहुत अ, पसंद है। मान लीजिए आपको आप चॉकलेट डेयरी मिल्क सर्च करते हो, तो कुकीज़ समझेगा आपको डेयरी मिल्क बहुत ही पसंद है। इसलिए आपको कुकीज़ क्या करेगा, डेयरी मिल्क का एडवर्टाइज आपको फेसबुक के थ्रू या आपको जीमेल के थ्रू आपको, या कोई भी ऑनलाइन साइट के थ्रू आपको शो करता ही रहेगा, रिकमेंड रिकमेंड करता रहेगा कि आप खरीदे। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कुकीज़। सो आंसर, so how do you transfer cookies to the HTTP protocol? So answer, for transferring the cookies to HTTP protocol,
एट द कुकीज नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो आपको यो क्या बोलता है, इन्वर्टेड कमा मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो इन्वर्टेड कमा मोस्टली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि अ, हम लोग जावा हो या सी प्लस प्लस हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को क्या क्या है, ये इन्वर्टेड कमा, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट, सेमीकोलन। ठीक है, क्योंकि बिना सेमीकोलन दिए कोई भी हमारा क्या होता है, हम कोई भी इनपुट देते हैं तो बिना सेमीकोलन का हमें आउटपुट देगा ही नहीं। अगर सेमीकोलन नहीं देंगे तो डिबग भी नहीं होगा और एरर्स दिखाई दिखाई पड़ेगा। सो सेमीकोलंस का वैल्यू और इन्वर्टेड कमा का वैल्यू तो आपको पता ही है, ये बोलना भी नहीं पड़ेगा। एंड हेडर टू योर रिक्वेस्ट एंड नंबर 23 क्वेश्चंस, हाउ इज ए ग्लोबल वेरिएबल डिफरेंट देन लोकल वेरिएबल्स? So answer is, you can access global variables globally in the complete program, and access to local variables is only within the functions. And number 24 questions, which data structure is used to manage memory? So heap data structure is used for memory management. Heap ये वाला, ये वाला heap data structure is used for memory management, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट में आपको heap data structure यूज होता है। एंड 24 नंबर क्वेश्चंस, do you know the size of the C structure below on a 32-bit system and on a 64-bit machine? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 32 बिट का अगर आपका कंप्यूटर है तो आप मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है, ये सबको समझ आ जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कंप्यूटर आपका विंडोज़ 10 सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, विंडोज़ 10 आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप विंडोज़ 10 अपडेट करके आप 64 बिट तक भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, 64 बिट तक भी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर 64 बिट अपडेट कर लिया तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छा ही दिखाई पड़ेगा। द साइज ऑफ द सी स्ट्रक्चर ऑन ए 32 बिट इज 4 बाइट एंड ऑन ए 64 बिट मशीन इज 8 बाइट। तो आपको मैं बता दूँ, ये बाइट जो होता है ना, ये बीट होता है, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये ठीक है, ये 4 बिट का 8 बाइट होता है, एक 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट एंड 4 बिट। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4 बिट में 8 बाइट होता है। ठीक है, ये आपको इज लाइक, मैं आपको आईपी एड्रेस से बता दूं, आपको 012 या 126, या आप यहाँ पर अगर मान लो 156 आप यूज कर लो, आप जितना भी यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है, इसमें, लेकिन लास्ट में आप 256 यानी कि 220, सॉरी 200, मैं यहाँ पर आपको ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, आप जितना भी यूज करें, लेकिन आपको 8 बिट अंतिम बिट में आपको 256 से ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 256 क्या होता है, इंडिंग होता है कोई भी आईपी एड्रेस का। ठीक है, तो आप 0 से लेकर आप जितना तक भी लिखिए, लेकिन लास्ट में आप 256 से ऊपर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 256 से ऊपर का आईपी एड्रेस होता ही नहीं है। इससे ऊपर का आईपी एड्रेस आपको हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, डेसिमल में नहीं होता, आपको हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में। अगर आप 256 से ऊपर लिखेंगे, मान लीजिए आप 256 लिख रहे हैं, 256, 256 से अगर आप ऊपर लिख रहे हैं, मान लीजिए जे आप 7 7 चढ़ा 707 अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपको
ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट ई या कुछ भी आपको एक अल्फ़ाबेट देना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। आप इसका बेसिक्स भी पढ़ सकते हैं डेसिमल्स का, ठीक है। तो इस हिसाब से हेक्साडेसिमल युज होता है, ठीक है। यो हिसाबले हेक्साडेसिमल युज हुन्छ। त्यतापट्टि यसलाई चाहिँ भनिन्छ हाम्रो अक्टेटको रुल्स पनि हामीले फलो गर्न सक्छौँ। सो ये आपको नेटवर्किंग में आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि अगर आप CCNA जिसको बोलता है सिस्को नेटवर्क एनालिसिस सर्टिफाइड एनालिसिस, आप वो भी कर सकते हैं। सिस्को नेटवर्क सर्टिफाइड सिस्को नेटवर्क प्रोफेशनल, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग लाइन का कोर्स है ये। और उसके बाद 26 रेगुलर एक्सप्रेशन, 26 नंबर क्वेश्चन, रेगुलर which regular expression matches an email ID. So a simple regular expression rejects ऑफ हेड, ठीक है। इसको ऑफ हेड बोला जाता है। इसको जो है 1 मिनट। ये OBS स्टूडियो चलाने के बाद थोड़ा सा हैंग ही करता है मेरा। हाँ, मुझे लगता है कंप्यूटर ही मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो माइंड मत कीजिए, थोड़ा देर आप वेट कीजिए। तो इसको जो है तो हम ऑफ हेड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऑफ हेड बोलते हैं। ऑफ हेड रेजेक्स ऑफ हेड, स्टार्टिंग ब्रैकेट डॉट प्लस ब्रैकेट एंडिंग एंड एट द रेट, फिर ब्रैकेट स्लैश एस प्लस ब्रैकेट क्लोज एंड डॉलर साइन मैथ्स एंड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में जैसा कि अगर आप लिखती हो एज लाइक मेरा नाम अजय है, AJY अजय 1234566 @gmail.com। अगर उसके आगे में मैं अगर लगा दूँ अजय, ठीक है, उसके बाद 123 प्लस और माइनस और ऑफ हेड और कुछ भी लगा दूँ, लास्ट में मेरे को @ लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद gmail.com या email.com या hotmail.com में लिख। तो आपको यहाँ पर बोला गया है ईमेल आईडी में आप एक्सप्रेशन आप ये जितने भी सिंबल्स है आप ये मैच होता ही है। तो 27 नंबर क्वेश्चंस, गिव एन एरे, फाइंड द contiguous sub-array with the largest sum in dynamic programming. So start an iteration for one one that goes from 0 to n minus 1, where n is the number of elements in the array. Now that we have reached this point, we are going to execute an nested loop for j that ranges from 1 to n minus 1 and 8 the value of the element located at index j to a variable called current max. In the end, we will examine each subarray to determine whether or not the current max represent the greatest sum of all adjacent subarray. And 28 number questions, find the minimum spanning 1 minute. Find the minimum spanning tree of a connected undirected graph with weighted edge. तो नंबर 1 मेन, ये आप प्रोग्रामिंग में खासली होता है। मेन स्टार्ट इंटर द नंबर ऑफ vertices in this field, initialize variables, determine the edge that are incident on each vertex and have the last amount of weight,
Create an array containing all of the vertices that are related to the first vertex. Uh, if there is more than one component, this indicates that the minimum spanning tree has still not been constructed, and the situation become more complicated. And open-ended questions. So 29 number question. 29 number question. A man a man lost his fortune because he pushed his car to the hotel. Why? The man lost his fortune because he is playing Monopoly and feels short of money for paying rent on the hotel space. So, question number 30. For cleaning all windows in Seattle, what would you charge? You can answer it as $10 per window. So 31 number, how many? Sorry, wait. So 31 number, how many golf balls can fit in a school bus? So put 85 inches radius with a behavior ball divide that 2.5 cubic inches into 1.6 million, and you come up with uh, 6 lakhs 60,000 golf balls. And 32 number, how many pianos tuner are there in the entire world? On average, there are approximately 1500 pianos per station. For piano tuning gives given this figure, it can be calculated using the number of pianos in the world land. The figure 1500, at present it stands at 11,000 odd pianos tuners in the world. And 33 number question, how many times a day does a clock's hand overlap? In a day, at each lap of 65 minutes, both the hands of the clock overlap. Keeping this in mind, it happened 22 times throughout the day. 34 number, how would you boost the Gmail subscription base? To increase the subscription base for Google, I would try and curate a custom strategy to maximize lead generation for Gmail. For these questions, I would like to draw your attention to a campaign I developed for Google for a client to manage to increase their customer base by a great margin of 22%. I will be looking into researching what attracts the target audience best and experimenting with multiple strategies to see which helps us receive positive results. And 35 number questions, out of the series equations of 0 1 1 2 3 4 5 9 13 and 22, which is the odd one out? It can be seen from the series above, all the succeeding numbers are the sum of itself and the number before it. However, number 9 has no contribution to this equation, and thus is the odd one out. 36 number question, how will you get an answer of 1000 if you add only 8 together? To be able to achieve 1000 as the final answer using just the number 8, you will first have to add the number 8 allowed 3 times, and then
888 to the sum, and then move on to adding 888 8800 so 888 to the final answer. The equation is as follow: 8 plus 8 plus 8 is equal to 24 plus 88 112 plus 888 is equal to 1000. So here is practically sorry, wait, I'm erasing it. Wait. So uh, I have solved it practically, and I have uh, already given you answer practically. 8 plus 8 plus 8 is equal to 24 plus 88 is equal to 112 plus 888 triple 8 is equal to 1000. So this is mainly, so this is main answer. And let's go number 37. So let's go number 37. While looking at a clock, if the time is 3:15, what is the angle between the hour's hand and the minute hand? Given how a clock has 360 degrees as it is a complete circle. It is complete circle. A circle is complete a circle. So mm, this is 180 degree and this is 180 degree. Okay, so both side 180 and 180 degree, and it will be 360 degree circle, vritakar circle. Okay, so if the time is 3:15, the angle between the two is 7.5 degrees. And 38 number, Google Ad service questions. Okay, this is Google Ad service questions. It is mostly mostly important. So number 8, sorry, 38. How much money do you think Google makes daily from Gmail ads? So about 100 million per day through Adword. 39. Explain how Google Adword works. Google Adword is designed to help companies target two categories of network display and search. With the help of a search network, business pick and bid on all the relevant keywords that resonate with their target audience. On the other hand, a display network allows business to display their ads to all users who are interacting with their chosen keywords for a specific targeting. And number 40, what should be the ideal quality score for AdWords? Quality is very important to ensure the maximum effectiveness of the used Google AdWord. Therefore, the ideal quality score for Google AdWords is between 8 to 10. And HR round Google behavior interview questions. So 41 question: what is your favorite Google product? How will you improvise it? So my Google favorite product is VS Code. because इसमें होता क्या है VS Code में कि मैं जितना भी सॉफ्टवेयर मैं एंड्रॉयड डेवलपर भी हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और आईओएस एप्लीकेशंस भी बनाता हूँ। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी एप्लीकेशन है और वेबसाइट्स भी सम सॉफ्टवेयर भी मैं डेवलप करता हूँ। सो मैं क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो दिया है ये VS कोड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मैं थोड़ा देर में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का बता रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है।
बाद में हम गूगल का भी जानेंगे, गूगल माइक्रोसॉफ्ट। आखिर अ, मुझे लगता है VS कोड माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया होगा। VS कोड में ऐसा होता क्या है कि पहले हम लोग जितना भी टाइपिंग करते थे ना, वो कोडिंग करते थे, कोडिंग। तो पहले मैं क्या चीज़ में करता था, मतलब वो पैड, ऐसे क्या नाम था, पैड, एडिट पैड ना, ऐसे ऐसे कुछ नाम था। तो उसमें मैं करता था। उसमें होता क्या था सिंपली, कितना बार तो मैं C++ का डेव से भी किया हूँ, ठीक है। गूगल से वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके उसके बाद डेव एप्स इंस्टॉल करके उसमें C++ का कोडिंग भी करता था। तो बोर हो जाता था उसमें, थोड़ा सा क्या है, टाइमिंग बहुत लग जाता था। लेकिन VS कोड में क्या है, अभी आप कोई भी एप्लीकेशन रन करा सकते हो, इंस्टॉल करा कोई भी एप, सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप रन करा सकते हो। इज लाइक पाइथन, C++, जावा, रूबी, पर्ल, SQL। उसके बाद आपका हो गया अ, ये PHP, CSS, आप जो भी चाहते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VS कोड में सब कुछ आप रन करा सकते हो। इसमें ऑटो सजेशन सिस्टम भी होता है। इज लाइक अगर मैं HTML का अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसमें दूंगा एक ग्रेटर दे दूंगा, उसके बाद डॉक टाइप HTML दूंगा, फिर एक आ, ये साइन देके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज करके इंटर दे दूंगा, उसके बाद फिर लैंग्वेज से सेलेक्ट करूंगा, फिर उसमें दूंगा HTML इज इक्वल टू HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में हिंद सॉरी इंग्लिश दे दूंगा, फिर क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर मेरे को कैरेक्टर सेट करना है, तो HTML कैरेक्टर भी मैं सेट कर लूँगा। उसके बाद फिर मेरे को क्या बोलता है वो, अगर मेरे को लाइनिंग देना है, तो मैं बी आर दे के लाइन ब्रेक भी कर सकता हूँ, या HR दे के भी मैं कुछ भी, मैं कोई भी कमांड देके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सॉरी मैं कोई भी कोडिंग कर सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया तो HR का पूरा क्या होता है, कंसोल आपको पूरा का पूरा आपको सजेशन दे देता है, ठीक है। अगर मैं कौन लिख दूँ तो कंसोल का पूरा क्या होता है उसका, कंसोल का पूरा सजेसन दे देता है, ठीक है। कंसोल को पूरै सजेसन दिइहाल्छ क्या। मैले डक टाइप, मैले सुरुमा HTML को डक टाइप HTML लेख्दा लेख्दै मैले डक मात्रै लेख्यो भने डक टाइप HTML अटोमेटिक सजेसन आइहाल्छ। र मैले माउस यसरी लगेर त्यहाँतिर यो एरो त्यहाँ लगेर क्लिक गरिदियो भने अटोमेटिक टाइपिङ भइहाल्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसके लिए क्या होता है कि मोस्टली प्रोग्रामर को थोड़ा सा टाइम बच जाता है। नहीं तो पहले कोडिंग करते करते हाथ फिंगर भी दर्द होने लगता था, टाइम भी बहुत ले लेता था, और फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि मोस्टली प्रोग्रामर्स जितने भी कोडिंग करते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है माइंड। एंड बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है इसमें, क्योंकि अब आने वाला कुछ टाइम में मैं भी आपको जावा C++ सिखाऊंगा। ऐसे मैंने फ्लटर फ्लटर का ट्यूटोरियल्स में रोस्ट करके भी मैंने आपको इसमें क्या बोलता है, सॉरी, रोस्ट करके मैंने आपको यूट्यूब में मैंने वीडियो भी छोड़ा है। और ब्रेन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मोस्टली अभी लेडीज लोग भी देख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रेन। उसके बाद आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और ये, तो ब्रेन, उसके बाद ये मैंने जो टाइप किया, ये ब्रेन और ये इसको जोड़ के आप बोलो एक बार। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी मैंने रोस्ट करके आपको क्या बोलता है इसमें यूट्यूब में वीडियो बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेन और इसका ब्रेन इसका क्या है, अगर आप प्रोग्रामिंग इसका ट्यूटोरियल्स अगर आप, या इसका पूरा का पूरा वीडियो आप चाहते हो, तो मैं इसका भी बना दूंगा, पूरा प्रैक्टिकली के साथ, पूरा लैब बना के पूरा आपको
प्रैक्टिकल में आपको ये कोडिंग भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो एंड 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन गूगल, गिव 3 रीजन। तो आप कोई भी रीजन दे सकते हो, यू कैन गिव एनी रीजन, you can say any reason. And 43 number, tell me about tell me about the time you had to change. And I hope uh, you can say you can say of these questions answer. And 44 number, if you are in a coffee shop with Sundar Pichai, uh, what will you do? Sundar Pichai, who is Sundar Pichai? Pichai is a CEO of Google. सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आई होप अच्छा लगा, राम्रो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, इन्जोय गर्नु होला। तो आई होप you enjoyed this video, and next video I will bring uh, better than it. And if you like this video and like this part, so give me लाइक हम लोग को चाहिए क्या भाई, एक लाइक चाहिए प्यारा सा, एक कमेंट चाहिए, और आपका कीमती सब्सक्राइब चाहिए। तो कर देना भाई, कर देना, इतना हम लोग मेहनत करते हैं। देखते अभी रात का 12 बज के 2 मिनट हो रहा है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 12 बजे रात को, एक बजे तक रात को, 12 बजे 1 बजे तक आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लाइव भी आता हूँ। तो फेसबुक पे भी डालता हूँ पेज पे, उसके बाद यूट्यूब पे भी डालता हूँ। फिर इसको क्या बोलता है, थंबनेल एडिट करना पड़ता है भाई, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, टैग्स लगाना पड़ता है, कैटेगरी से सिलेक्ट करना पड़ता है। बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है भाई। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा भाई, फ्री है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं सोचूंगा मेरा भी मेहनत बेकार नहीं किया। एंड सो सब्सक्राइब कर देना भाई। अ, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आंसर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इस बार तो मैंने गूगल इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर सोल्व करके दिखाया। अगर आप चाहते हो अमेजोन का और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ का अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर अगर चाहते हो, तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना। मैं अ, आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या अमेजोन कंपनी का भी, आपको वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या डेटा साइंस साइंटिस्ट का क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं उसका आंसर आपको देने का कोशिश करूँगा। कोशिश तो नहीं, मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। तो आ, तो वीडियो यहीं पर इंड करता हूँ, एंड रात भी बहुत हो चुका है। तो ये वीडियो मैं, हो सकता है कल तक मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि नींद भी बहुत लगा है भाई, आंख दर्द कर रहा है, ऐसे गर्मी भी बहुत है। तो बाय बाय, सी यू लेटर, एंड प्लीज you have to subscribe, okay, subscribe my channel, okay, mostly, and तो रहने देते हैं, बात बाकी नहीं बोलेंगे भाई, ज़्यादा बोलेंगे तो चीनी जैसा मीठा लगता है वैसा तीता भी हो जाता है। तो ज़्यादा चीनी खाने से भी तीता हो जाता है, वैसे अब ज़्यादा अब तो मैं नहीं बोलूँगा। सब्सक्राइब कर देना भाइ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नमा केही पनि पैसा लाग्दैन, त्यही यत्रो मेहनत गर्दैछौँ हामी। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ, एन्ड see you later next video. And if you have any doubt, any questions, then can message me directly, okay. So bye bye.